Hello class, how are you? Today we start the new topic of our this chapter. Okay, the topic is a composite function and inverse invertebrate functions. Okay, you all know the type of all the functions, right? So let's start as a composition of functions and also the invertebrate of functions. The first composition of the functions. So simple, we have two functions f from a to b and g from b to c. Be the two functions, then composition of f and g, these two functions denoted by g of f, right? G of f of x, it is denoted, right? Defined as a function g of a to c. Defined of these functions, right? बच्चों, it is the a to c, from a to c, such that g of f is equal to g of f of x is equal to g of fx for all x belongs to a. All x belongs to a, right? Important things. राइट तो बहुत सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन है f फ्रॉम a टू b है f और g है वो b टू c है, तो यहाँ पे क्या आपको सेम दिख रहा है, ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे बहुत सीधी चीज दिख रही है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तो आप क्या शॉर्ट में याद रखोगे, rf इज इक्वल टू dg, देन पॉसिबल, राइट? सो द कंपोजिशन फंक्शन g of इज डिफाइंड। ओके, इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको पता है g of a to c बच्चों, a to c। ओके, तो a to c, तो a to c, तो g जो है वो आपने यहाँ पे देख लिया कि a to c है, तो क्या होना चाहिए आपको, क्या रिमेम्बर करना है, इट्स अ सिंपल, ओके, इट्स वेरी सिंपल, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू dg, राइट? rf इज इक्वल टू dg मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ओके, डोमेन ऑफ g मतलब सेकंड फंक्शन g, so it is called the composition function. So g of f of x is defined, it's very simple, right? चलो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आपके पास लेट f from 1 to 3, a इसका डोमेन है, a इसका रेंज है, right? So the function f is defined that 1a 2b 3c, right? Then after, okay, so g is the domain a b c and 5 7। तो सबसे पहले चेक कर लो रेंज ऑफ f, राइट? ए रहा रेंज ऑफ f आपका a b and c, राइट, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तो g का डोमेन क्या है, a b c, दोनों इक्वल है, यस, तो g f of इज एग्जिस्ट यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हियर, राइट, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू dg। सो ओके, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि g of f इज एग्जिस्ट, ओके, इज एग्जिस्ट, राइट? अब मैं आपको सीधे बता दें क्योंकि अब पता चल गया हमें कि rf इज इक्वल टू dg यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, राइट? तो सो दैट्स व्हाई g of f इज पॉसिबल। ओके, चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट g of f of x इज इक्वल टू नॉर्मली डिफाइन क्या किया है, तो कि f of x, g of f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a रहा, तो फंक्शन इज डिफाइंड ऑलरेडी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, g of f of, तो f का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, a to c होता है, ओके, तो g of f डिफाइन है, सो g to 1 बच्चों, तो इधर g of क्या आएगा, f of 1, राइट? सो g of f of 1 क्या है, a, राइट? तो g है क्या होगा, g of a, तो यहाँ पे आओ g के फंक्शन के अंदर, तो g of f इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 5। अंडरस्टैंड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। g of f of second function that मतलब domain, so 2, so g of you defined as f of 2, चलो f function में डिफाइन में जाओ 2, तो रेंज कितना मिल रहा है, b, so यहाँ पे g b, अब b के अंदर हम लोग g फंक्शन g b कितना है, so g of b is equal to 7, so is equal to 7, right? Okay, g of f of the 3, so you written here g of f of 3, f of 3 की वैल्यू कितनी है, so f के अंदर f of 3 is equal to c, so g of c भी कितना है बच्चों, 7। okay, so you already go is defined, so g of f is equal to, right, अगर 1 है you got 5, okay, you got 2 7 and also 3 7, right? तो सीधी बात है बच्चों, g of f, okay, g of f is defined as, so defined as क्या था, so 1 right, 2 and 3, right? Okay, tends to 5 and 7, right?
So is a exists. समझ में आएगा? तो नॉर्मली कोई भी कंपोजिट फंक्शन ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट? तो सम प्रॉपर्टीज, चलो लेट्स सी दैट फर्स्ट. So properties of the composition functions, right? Okay. So composition function is not a commutative, right? इधर से भी आप देख सकते हो, मैंने पहले बोला range of function is equal to okay dg domain of g. अब f o g है तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट? यहाँ पे देख लो g o f हो रहा है, f o g नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो दिया है उसके ऊपर से. So this is not a composite functions, right? So g of fx not equal to f of g of x. Number 2, क्या दिया यहाँ पे? composition of function is associative. Yes, associative है. f of g of f is equal to h of okay the function is, right? So the मैं यहाँ पे इसको h कर देता हूँ, तो हम लोग लिख सकते हैं h of g of f functions, right? Okay. Third, composition function of in identity function is the function itself. यानी f of f is equal to, अगर फंक्शन f from x है ना, x to y है, तो आप जाते f of x is equal to f मिलेगा, and g of f of g is equal to g मिलेगा, right? So आप सिंपल फंक्शन itself. तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज. अंडरस्टैंड? ओके. तो देखो यहाँ से फिर से the composition functions with an identity function is the function itself. तो identity function अभी आपने चैप्टर स्टार्टिंग में देखा था, all types of the functions. Okay. The compositions of the function of two मतलब two on two function is always on two. यानी कोई भी दो on two function है, अगर उनका हम लोग compositions कर रहे हैं तो वो भी on two आएगा. और on two आप जानते हो क्या है? Surjective है. क्या है? Surjective, right? Okay. On टू का मतलब क्या होता है? y की सेट नंबर t जो है, ओके, तो उसके एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज हमें सेट a में मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली इफ द कंपोजिशन ऑफ g o f ऑफ द टू फंक्शंस इज 1 1, ओके, देन f and g नॉट नीड टू बी 1 1. अगर कंपोजिशन g o f 1 1 आ रहा है तो जरूरी नहीं f और g को भी 1 1 होना चाहिए, राइट? वो 1 1 ना आए तो भी पॉसिबल है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो देखो यहाँ पर भी आपने देखा तो दो वैल्यू आई ना 7 7, तो ये तो मैनिमल हो गया, नॉट 1 1, तो पॉसिबल है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ द कंपोजिशन ऑफ द g o f ऑफ द टू फंक्शन इज ऑन टू, देन अगेन नॉट नीड टू f and g both are on to function. Clear? So this is the most important property, okay, and depends on the normally is the properties of the composition functions, right? Okay, understand? So it all are the example of the composition functions normally. Composition of functions. So I have defined g o f and f o g also both are defined, right? और आपने दो चीज बताई कि अगर इन क्या आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो f o f is equal to f मतलब x हो जाएगा, ओके, एंड g o f is equal to i x और वो i y हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. इनवर्स फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये जो लास्ट हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे इसमें यही दो चीज हमें फोकस करनी है, राइट बच्चों? चलो लेट्स इनवर्स फंक्शन. तो सिंपल आर टू फंक्शंस, राइट? यहाँ पे तो सबसे पहला फंक्शन f from x to y, याद रखना. अब फंक्शन f from x to y अभी एक फंक्शंस के लिए इट शुड बी invertible मतलब inverse. Okay, if there exists a function of g y to x, domain range क्या होगा? डोमेन, यानी डोमेन टेंड्स टू कोडोमेन, सो कोडोमेन टेंड्स टू, ओके, क्या होगा? डोमेन. अंडरस्टैंड? ओके, सो such that g of f is equal to ix, आया? g of f is equal to ix and f of g is equal to I, that means you know that identity functions, right? Then the function is called the inverse of the function f, okay, and also it is denoted by f inverse. ओके, तो आपने बहुत सारी चीजें एक साथ एकदम लिटरली क्लियर कर ली. अ फंक्शन f from x to y is said to be invertebrate if there exists a function g from y to x, राइट? तो एक चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए, क्या मिलना चाहिए? g of f is equal to ix and f of g is equal to iy. ओके, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्टिब्रेट, मतलब f is invertebrate, f इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन सिमिलरली, राइट? तो बच्चों क्या नॉर्मली देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन.
So a function is invertebrate if and only if, okay, if and only if it is 1 1 and on 2. इनवर्टिब्रेट के लिए बहुत सिंपल चीज है, फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होना चाहिए। ओके, अगर 1 1 नहीं है तो सीधी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, सो वी विल नॉट फाइंड आउट द, सीधी बात है, इनवर्स फंक्शन। चलो आगे, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट द यूनिक, अगर मतलब इनवर्स मिल रहा है तो वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। उसके अलावा और कोई इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हियर द इनवर्स ऑफ द 1 1 and on 2 function is also a 1 1 and on 2. यस, अगर इनवर्स फंक्शन बच्चों सीधी बात है, कब इनवर्स पॉसिबल है कि 1 1 and on 2 हो तो सीधी बात है उसका इनवर्स भी 1 1 and on 2 होगा, राइट? ओके, सो inverse of the inverse function is always the function itself. So f inverse of inverse is equal to the function itself. Okay, and then after, okay, उसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, if f and g are the two 1 1 and on 2 function, then inverse of the g of it is exists. Yes, possible है। Then g of is inverse is equal to f inverse of g inverse. Okay, so जैसे हम लोग g of लिखते हैं वैसे आपको ये याद रखना है, right? So this is the very most important properties of the inverse functions. चलो clear? So this is the basic fundamental of the properties you normally see that, right? तो एक एग्जांपल से आपको पता चल गया कि GOF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप कोई भी कंपोजिट फंक्शन का अगर आपको देखना है कि पहले आप सॉल्व करना चाहते हो तो पहले एक ही चीज कर दो, RF is equal to DG। ओके, इस शॉर्ट फॉर्म को याद रख दो, RF मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ G, DG मतलब डोमेन ऑफ G, द सेकंड फंक्शन। चलो क्लियर? ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है उसको ओके समझने का। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, 1.3 बच्चों। ओके, तो फर्स्ट ऑफ दिस चलो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? तो नंबर 1 फर्स्ट f is defined, f defined 1 3 4, okay, it's a domain and the range of f is equal to 1 2 and 5, right? Then decide f range यहाँ से मिल जाएगी हमें, it is defined by the function 1 2, okay, and 2 1 2 3 5 1 2 3 5, okay, and also the 4 1. Now a function g is defined from function g defined, so g defined from 1 to 5 yani domain, right, and the codomain that is the 1 and 3. Now the g is defined, okay, so g are defined from 1 3, okay, 2 3 and 5 1. oh clear? तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट डाउन द g of exists or not। ओके, तो यहाँ पे देखो रेंज ऑफ फंक्शंस 1 2 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ऑफ फंक्शंस क्या है 1 2 5 इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ g, dg होना चाहिए, राइट? सो डोमेन ऑफ g देखो AR डोमेन, सो dg है, ओके, सो क्लियर? सो ओके, GOF इज एग्जिस्ट, क्या है बच्चों? ओके, इज एग्जिस्ट, ओके, क्यों एग्जिस्ट है? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g हो रहा है इसीलिए। ओके, तो अभी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो RF इज इक्वल टू dg, सो DOF इज इक्वल टू एग्जिस्ट। चलो तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। सो GOF इज इक्वल टू GOF ऑफ fx इज इक्वल टू नॉर्मली फॉर्मूला क्या है g ऑफ f ऑफ x, राइट? सो लेट्स स्टार्ट g ऑफ f ऑफ x, आपका डोमेन तो नॉर्मली क्या आएगा 1, ओके, तो जस्ट सी दैट g ऑफ
into bracket f of 1, राइट। चलो f1 की वैल्यू कितनी है, तो f के अंदर जाओ, f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इज इक्वल टू g2, राइट। ओके, तो g2 क्या है, तो ये रहा g2 इज इक्वल टू 3, गॉट दी 3, राइट। अगेन g ऑफ f ऑफ 3, सो हम यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ f3, ओके। सो g ऑफ f3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, f3 is equal to 5, understand? Okay, so g5 here, so g5 is equal to 1, right? Okay, now g of f of the function, क्योंकि g of f defined from क्या, a to c, so a to c, right? a b c ऐसे मानो, तो a to c g of f defined होता है, right? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, so g of from, so just see that g of f of 4, so g of f of 4 is equal to f4 कितना है बच्चों, so यहाँ पे देख लो f के अंदर f4 is equal to 1, so f of 1, so we got, sorry, g of, right, g of 1, so g of 1 is equal to again 3, right? So simple, so therefore g of f is equal to pair 1, अगर 1 you got the 3, okay, put 3 1, okay, 4 and 3, right? So clear? So g of f is already defined, understand? It's very easy, okay। तो पहले आपने क्या कर लिया, यहाँ पे where rf is equal to dc आपको मिल जाना चाहिए, बस you got it, then finish, okay, so this thing, understand? Okay, so let's start question number 2, यहाँ पे हमने find define कर लिया, so question number 2, so question number 2, let f, g and h be the function from R to R, so that f plus g of h is equal to f of h plus g of h, and also the f into g of h is equal to f of h, okay, into, okay, g of h, okay। सबसे पहले तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बता दिया कि f, g and h are the function from R to R, domain and range co-domain, okay, वो क्या है, रियल नंबर सेट है, okay, तो प्रॉब्लम है ही नहीं, so that, चलो, so let's start, first of that first, चलो, function from, तो here function from f from R to R, g from R to R, and h from R from R. So f from R to R, g from R to R, and also the h from R to R. Understand? Okay. Is given that already. Okay, in sum. So f of, chalo, f plus g of h of x is equal to, normally given that, okay, so given that f of g, so let's start, f plus g, okay, of h of x, right, of h of x, yeah. Normally h of x, no problems, h of x, right? Now simplify this, so therefore f from h of x plus g from h of x, right? So can we determine this kind of f of h of x, right, plus g of h of x? Can we return from this? Yes. So can we return? So therefore f plus g of h is equal to f of h plus g of h. Understand? So first result is completed, right? So similarly the second result is the same, but in the product, f into g of h. So the for to f into g, okay, into of x is equal to f of hx, okay, f of hx normally, okay, into, okay, g of hx, right? So here, okay, f of h. Now, so this one is a f of h, okay, of x into g of h of f, h, right?
of x. So it's simple. So f of h into g of h is equal to f into g of h. So here of x. So we already define both. Okay, it's a very simple. Understand? Right? Now the question number 3. Find the GOF and FOG. Right? Find the GOF and FOG. Okay, exit. So the mode, because this is the mode function. So mode function you know that R to Z, क्योंकि जो सामने मोड आएगा वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे. ओके, एंड दिस इज आल्सो द क्यूब रूट ऐसे. ओके, सेम बोथ आर मोड फंक्शन है इसके लिए. सो लेट्स सी दैट नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. So now question number 3. First, simple. I need FOG and GOF both. So first, number 1, function f of x is equal to mod x and g of x is equal to mod of 5x minus 2. Okay. So now let's start. GOF of x. So g of f of x is equal to g of f of x बच्चों कितना है, राइट? तो देखो f of x कितना है आपके पास, मोड x है. अब a मोड x की वैल्यू मतलब x के फॉर्म में कहाँ पे g के अंदर आएगी, तो ये मोड इनटू 5 ऑफ मोड x minus 2, राइट? अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, नाउ FOG. चलो FOG of x is equal to क्या करेंगे, f of g of x, f of g of x. So f g of x. So g of x क्या है बच्चों, so into mod 5x minus 2. So put here in the f, so mod of mod 5x minus 2. So we got mod 5x minus 2. So clear? Understand? Okay. Now number 2. For number 2, right now. So number 2, that means okay, fx is equal to 8x cube. So therefore fx is equal to 8x cube. Okay, and g of x is equal to x raised to 1 by 3. Okay, so GOF of x is equal to g of f of x, right? So g f of x out is a 8x cube. Okay, put in the place of g. g के अंदर x की जगह पे आप 8 पुट करोगे तो 8x cube, right, raised to 1 by 3. So simple, 2x, right? So this is the answer. Okay, now next here FOG of x is equal to f of g of x, f of g of x, right? Okay, so f of g of x, so f g of x क्या है बच्चों, ये रहा आपका g of x, x raised to 1 by 3, right? So put here in the place, so x की जगह पे x 1 by 3 all raised to 3, 3 cut, we got 8x. Okay, so we solve the question number 3 also, right? Now, okay, now question number 4. Okay, what is the question number 4? Just we see that. Okay, the question number 4 is a very important. If here is f of x is equal with the form of this, right? F of x is equal to 4x plus 3, 6x minus 4, 4x plus 3 and 6x minus 4, right? Okay, so that where x does not equal to 2 by 3
then so that f of f is equal to x. F of x is equal to x for all x does not equal to 2 by 3 उसके अलावा सारे for x okay not equal to. So what is the inverse of f? What is the inverse of f? What is the inverse of f? Right? Okay. चलो सबसे पहले तो आपने देखा था कि बच्चों इनवर्टिब्रेट फंक्शन है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, एक तो 1 1 और ऑन टू, राइट. एक मेथड है क्या होनी चाहिए 1 1 है ऑन टू, राइट. दूसरी एक मेथड है एफओजी और जीओएफ दोनों अगर इक्वल आ जाए ना तो भी ये इनवर्टिब्रेट है. हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके कोई बात नहीं, जैसे तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे आप लोग मतलब कर सकते, कोई बात नहीं. जो मेथड अगर समझ में आए उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट. तो चलो सबसे पहले एफ दिया है, हम लोग उसको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट. चलो एफ क्या है, तो आपने बता दिया कि सर एफ इज इक्वल टू 4x plus 3 into 6x minus 4 where x does not equal to 2 by 3, right. Okay, तो सबसे पहले f of x is equal to f of x. तो आप लिख सकते हो f of x की जगह पे 4x plus 3 into 6x minus 4, right. चलो वैल्यू पुट कर दो तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फंक्शन 4, लेकिन x की जगह पे क्या लिखोगे 4x plus 3 into 6x minus 4, right, plus 3 as it is upon 6 into 4x plus 3 into 6x minus 4 and minus 4. Okay, so 4 4s are 16, x plus 12 plus 3 6 are 18x, okay, and minus 12, right, upon similarly a6 LCM cut, so 24x plus 18 minus 24x minus plus 16, right, minus plus 16, so 6 minus 4 the same functions I think. Okay, so now here first of that 12 cut 24 cut, here how much, so 4 one get 34x upon 34, cut it, then we got x. तो हमें क्या मिल गया f of x इज इक्वल टू क्या मिल गया x मिल गया, राइट. सो ये चीज तो आपने कंफर्म कर ली यहाँ पे, अंडरस्टैंड. ओके, सो f of x इज इक्वल टू क्या मिल गया x. तो देन f of f इज क्लियर, अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ द सिंपल वे, एक चीज आपने कर ली. अब हम लोग y एजम्पशन कर लेंगे, राइट. तो चलो क्या है बच्चों y इज इक्वल टू 4x plus 3 इनवर्टिब्रेट करना है ना हमें. यहाँ पे पूछा है कि इनवर्स ऑफ f क्या आएगा, तो 4x plus 3 into 6x minus 4, सिंपलीफाई करो, so y into 6x minus 4, right, is equal to 4x plus 3, so 6xy minus 4y is equal to 4x plus 3, y inside x inside, so 6x y minus 4x is equal to 3 plus 4y, normally x common, so 6y minus 4 is equal to 3 plus 4y, so x is equal to 3 plus 4y upon 6y minus 4, बराबर है. यस, तो x में मिल गया आपको फॉर्म. ओके, तो वो नॉर्मली है ना सेम टू सेम, खाली x की जगह पे y हो रहा है. तो इनवर्स क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. चलो तो f इनवर्स मुझे लिखो, सो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ओके बताओ, चलो f इनवर्स x, तो क्या लिखोगे a x हो जाएगा, तो 4x plus 3 upon 6x minus 4. दे तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, f ही मिला. तो आप क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर ओके इनवर्स ऑफ यहाँ पे राइट f o f क्या पूछा है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो इनवर्स ऑफ f इज ओके f itself, फंक्शन itself, राइट.
क्लियर? तो हमें ए अपने आप क्या मिल गया बच्चों, मिल गया। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ इनवर्स है क्या है, फंक्शन खुद वापिस मिला। अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? क्लियर? ओके। सो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन बच्चों 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है मोस्टली, राइट? तो वो क्या है नॉर्मली? ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स है। तो चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फर्स्ट एंड 2 देखो, स्टेट वेदर द रीजन। तो एफ फ्रॉम 1 2 3 4 है। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज के अंदर बता देता हूँ, और फंक्शन डिफाइन है। ओके, साथ में दिया है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2। तो आप स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको फंक्शन 1 1 है, पहले वो चेक कर लो। अगर 1 1 है तो ही ऑन 2 के ऊपर चेक करना है। 1 1 नहीं है तो फंक्शन कभी इनवर्स नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? बस इतना ही फोकस करना है। अंडरस्टैंड? बाकी के जो जितने समय ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद मैंने बताया था ऐसे बाइनरी ऑपरेशन शुरू कर देंगे, राइट? क्योंकि ये चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो मैक्सिमम ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर्स। Okay, so thank you for watching my video and also spending the time for me. Okay, till then and bye bye.